वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे gynecological सर्जरी। जो मोस्ट कॉमन सर्जरीज होती हैं वो सारी प्रोसीजर्स हम देखेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर्स और उनके टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट ऑप्शन जो भी हैं सर्जिकल हमारे पास, और एट द एंड हम देखेंगे फिजियोथेरेपी का रोल। gynecological एक्सीजन सर्जरीज सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हिस्टेरेक्टमी है। हिस्टेरेक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, फर्स्ट सक्सेसफुली परफॉर्म्ड इन 1853। कंडीशंस कौन सी हैं, इंडिकेशंस इसकी कौन सी हैं? हिस्टेरेक्टमी के लिए अनकंट्रोलेबल पोस्टपार्टम हैमरेज, सेकेंड मेलिग्नेंट ग्रोथ एंड अ रेंज ऑफ बेनाइन कंडीशन जैसे डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, फिब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है या फिर प्रोलैप्स। द यूजुअल लेंथ ऑफ पोस्ट ऑप हॉस्पिटल स्टे इज नाउ बिटवीन 3 to 6 days फॉर हिस्टेरेक्टमी। Hysterectomy may be carried out by either the abdominal or the vaginal route, depending on the reason for surgery and the size of the uterus, and should be explained fully to women prior to the surgery. For malignant conditions, the abdominal route is preferred to allow for the proper assessment of the adjacent tissues. अब हिस्टेरेक्टमी के लिए हमारे पास दो रूट्स होते हैं, हम विजाइनल भी कर सकते हैं, abdominal भी कर सकते हैं। abdominal हम तब करते हैं जब भी कोई अंडरलाइंग मेलिग्नेंट कंडीशन होगी, ताकि हम फुली एग्जामिन कर सकें पेल्विक कैविटी को, और उस पेल्विक कैविटी या फिर उसकी सराउंडिंग में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट विजरास, उनको हम असेस करें। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी को देखेंगे पहले। एब्डोमिनल रूट अलाउज इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द अदर पेल्विक ऑर्गन्स एंड सराउंडिंग टिश्यूज, फुल पेल्विक क्लियरेंस जिसे हम एक्सनिट्रेशन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड बाय द एब्डोमिनल रूट। Commonly, a total abdominal hysterectomy is performed, which removes the complete uterus, including the cervix. It can be combined with the removal of one or both fallopian tubes. अगर तो fallopian tubes को भी हम रिमूव कर रहे हैं तो ये सल्पिंजेक्टमी है, और इसके साथ अगर हम ओवरीज को रिमूव करेंगे तो ये ओफोरेक्टमी होगा। टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में वो है बर्थिंग्स हिस्टेरेक्टमी। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द चॉइस फॉर द सर्वाइकल कार्सिनोमा। लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन इसमें दिया जाता है। प्रोसीजर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ बर्थिंग्स हिस्टेरेक्टमी में हम लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन लेते हैं, इसमें यूट्रस के रिमूव करते हैं, यूट्रस के साथ साथ फ्लोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, मोस्ट ऑफ द वेजाइना और एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, इन सबको रिमूव किया जाता है। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी की वो है सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। दिस इज द रिमूवल ऑफ द फंडस एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस बट लिविंग द सर्विक्स। इसमें हम फुली यूट्रस को रिमूव नहीं करते बल्कि उसकी बॉडी और फंडस को करते हैं, एंड मे रिड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। सब टोटल हिस्टेरेक्टमी में क्या है, हमें कॉम्प्लिकेशंस कम मिलती हैं, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन से कम चांसेस होते हैं। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद bilateral salpingo-oophorectomy. This is the removal of uterus as well as bilateral fallopian tubes and ovaries. If this procedure is undertaken in the premenopausal woman, she may be offered hormone replacement therapy. अगर तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद बाइलैटरल सल्पिंगो-ओफोरेक्टमी हमने की है प्री मेनोपॉजल वोमेन में, तो साथ उनको हम HRT भी देंगे। पोस्ट ऑफ कंडीशन, पोस्ट ऑप में ड्रेन इज़ यूजुअली इंसर्टेड इन टू द एब्डोमेन, और ये कितने टाइम के लिए हम प्लेस करते हैं एब्डोमेन में ड्रेन, 24 to 48 आवर्स। इसके अलावा यूरिथ्रल कैथेटर इज इंसर्टेड एंड लेफ्ट ऑन फ्री ड्रेनेज अगेन यूजुअली फॉर 24 to 48 आवर्स। पोस्ट ऑप में एक तो ड्रेन हो गई, सेकंड हम यूरिथ्रल कैथेटर यूज़ कर रहे हैं, और इस दौरान हम क्या करते हैं, मेचुरेशन को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, एंड IV infusion will be in place usually for 24 hours until bowel sounds are heard and drinking and eating resumes. रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं हिस्टेरेक्टमी में? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी स्पेशली अर्ज इनकॉन्टिनेंस, विजाइनल वाल्व का प्रोलैप्स हो सकता है, डिस्पेरियूनिया है, और डिप्रेशन भी हो सकता है पेशेंट को। एडवाइस एंड एक्सरसाइज गिवन टू अ वुमन बाय अ स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट वाइल्स्ट शी इज हॉस्पिटल कैन मिटिगेट दिस पॉसिबल शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। जितनी ही हमारे पास पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं इन सबको हम कम कर सकते हैं अगर प्री ऑप एक जो है विजिट लिया जाए फिजियोथेरापिस्ट का। विजाइनल हिस्टेरेक्टमी को अब हम देखेंगे। एब्डोमिनल तो हमने देख ली, विजाइनल प्रोवाइडिंग दैट द कंडीशन ऑफ द यूट्रस इज नॉन मेलिग्नेंट, अ विजाइनल हिस्टेरेक्टमी में बी प्रेफर्ड रूट पार्टिकुलरली इन केसेस ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स। पोस्ट ऑप कंडीशन इसमें भी क्या होती है, विजाइना इज पैक्ड विद द गास टू कंट्रोल ब्लीडिंग। कितने टाइम के लिए वो गास प्लेस करते हैं, 24 से 48 आवर्स तक। अ यूरिथ्रल और सुप्राप्यूबिक कैथेटर इज इंसर्टेड एंड लेफ्ट ऑन फ्री ड्रेनेज again usually for 24 to 48 hours. Maturation may be difficult owing to the general trauma and should be monitored following the removal of the catheter. रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकती हैं, हेमाटोमा ऑफ द विजाइनल वॉल्व, मोस्टली ये 25% केसेस में हमें मिलता है। सेकेंड जो सर्जरी होती है गायनी में वो है ओफरेक्टमी, नाम से पता चल रहा है। ओफरेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ द ओवरीज। कब हम ओवरीज को रिमूव करते हैं, जब भी कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा, रिमूवल ऑफ द बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर को अगर रिमूव करना है, या फिर ओवेरियन सिस्ट है, या फिर डिजीज्ड ओवेरियन टिश्यूज। Ovarian cystectomy. This is the removal of the benign cyst from the ovary. The cysts are shelled out of the ovary and the remaining ovarian tissues is repaired. Salpingectomy है. Salpingectomy is a removal of fallopian tubes. It is unusual for this to be carried out as an isolated procedure.
बट इट मे बी अंडरटेकन फॉर दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक में भी जब स्पेसिफिकली साइट यही फ्लोपियन ट्यूब्स होंगी। वियर एन एनकैप्सुलेटेड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, अगर तो इसमें फ्लूइड है जैसे हाइड्रोसल्पिंजेक्स तब भी हम कर सकते हैं सल्पिंजेक्टमी, या फिर अगर इन ट्यूब्स में बस एक्यूमुलेट है तब भी हम सल्पिंजेक्टमी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास मायोमेक्टमी। दिस इज द रिमूवल ऑफ द one or more fibroids from the uterine wall. The procedure may be performed for a woman who has not completed childbearing. दी फिब्राइड्स आर शेल्ड आउट, सेम जैसे हमने सिस्ट को शेल्ड आउट किया था और फिर रिमेनिंग जो कैविटी थी उसको हमने स्टिच कर दिया था, सेम मायोमेक्टमी में हम करते हैं फिब्राइड्स को रिमूव करने के लिए। वल्वेक्टमी है रेडिकल वल्वेक्टमी इज एन एक्सटेंसिव ऑपरेशन परफॉर्म फॉर द कार्सिनोमा ऑफ द वल्वा। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑल द वल्वल टिश्यूज डाउन टू द बोन एंड फेशिया टुगेदर विद द सुपरफिशियल एंड द डीप इंग्वाइनल ग्लैंड्स एंड द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल आइलियक वेसल्स। सब्सिक्वेंटली मैनी वुमेन विल एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि वुंड इन्फेक्शन है या फिर ब्रेकडाउन वुंड की हो सकती है, लिम्फेडिमा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है एंड सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है। सेकंड जो वल्वेक्टमी की टाइप है वो है सिंपल। पहले हमने कौन सी देखी थी? रेडिकल, जो कि एक्सटेंसिव प्रोसीजर था। सिंपल वल्वेक्टमी जो है ये लेस कॉमन ऑपरेशन है, ये लेस एक्सटेंसिव है देन द रेडिकल वर्जन। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ सुपरफिशियल टिश्यूज एंड मे बी परफॉर्म्ड फॉर आइसोलेटेड वल्वल लीजन्स और द वल्वल इरिटेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गैनोकोलॉजिकल रिपेयर सर्जरीज। रिपेयरिंग में पहली जो ऑप्शन है वो है क्लोपोरेफी। क्लोपोरेफी क्या है? क्लोपोरेफी इज एन ऑपरेशन टू रिपेयर द वेजाइनल वॉल। इट एम्स टू रिकॉन्स्टिट्यूट द नॉर्मल एनाटमी ऑफ द एरिया वेयर प्रोलैप्स इज प्रेजेंट एंड विल यूजुअली बी परफॉर्म्ड वंस चाइल्ड बेयरिंग इज कंप्लीट। मतलब इसमें ये हम मोस्टली पोस्ट मेनोपाजल में करते हैं। सेकेंड है हमारे पास मैनचेस्टर रिपेयर। This repair may be offered to women who have uterine prolapse but do not wish to have the hysterectomy. Winchester repair हम उनमें करते हैं जिनमें uterine का prolapse होता है लेकिन वो hysterectomy नहीं कराना चाह रही होती। The procedure involve amputation of the cervix which may be elongated as well as interior and posterior repair and shortening of the transverse cervical and the uterosacral ligament. Subsequent pregnancy, while not recommended, is not impossible although delivery would be by cesarean section. विंचेस्टर रिपेयर के बाद जो प्रेगनेंसी वो रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर सी सेक्शन को प्रेफर किया जाता है फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट है हमारे पास सल्पिंजोस्टमी। सल्पिंजोस्टमी इज अ माइक्रो सर्जरी यूज टू रिपेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स। इट मे बी परफॉर्म वे अ लेप्रोस्कोप या फिर फिनेंस्टियल लीजन इंसिजन फिनेंस्टियल इंसिजन पॉसिबल इन द केस। Sylpingectomy को हम देख रहे थे। Sylpingectomy is the microsurgery used to repair a fallopian tube. It may be performed via laparoscope or the phalansteal incision, possible in the case of ectopic pregnancy where it has not been necessary to remove the whole tube. Phalansteal lesion हम कब लेते हैं? जब ectopic pregnancy होगी और साइड fallopian tube होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लेमियस वेंट्रो सस्पेंशन। दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म टू अ करेक्ट retroverted uterus, usually performed via laparoscope. The round ligament are shortened in order to pull the uterine fundus forward. सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। कैसे हम ट्रीट करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को? कोलोपो सस्पेंशन के थ्रू। कोलोपो सस्पेंशन अब क्या है? दिस ऑपरेशन इज डिजाइन टू लिफ्ट द ब्लैडर नेक so that when the intra-abdominal pressure is raised, it will act as a compressive force around the upper portion of the urethra. This reinforces the urethral closures pressure and counterbalances the pressure being exerted on the bladder. Laparoscopic colposuspension है। Laparoscopic technique requires more skill than the open procedure. Intraoperative time is also increased, although there is more rapid post-op recovery. Tension-free vaginal tap, जिसे TVT भी कहते हैं, TVT procedure is a minimal excess of technique performed under the local, regional, or the general anesthesia. The TVT device consists of a polypropylene mesh, जिसका साइज क्या होता है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर वाइड, covered by a plastic sheath and attached to a needle at each end. इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डेफिनेशंस ऑफ द अदर यूजफुल टर्म्स एंड प्रोसीजर्स। कोल्पोस्कोपी, दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइनल एस्पेक्ट ऑफ द सर्विक्स यूजिंग द क्लोपोस्कोप। क्लोपोस्कोप क्या है? लो पावर्ड माइक्रोस्कोप। DNC है डी फॉर डायलेटेशन एंड सी फॉर क्यूरेटेज। द सर्विक्स इज जेंटली डायलेटेड एंड यूट्राइन कैविटी इज सिस्टमेटिकली स्क्रैप्ड यूजिंग अ क्यूरेट। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है क्यूरेट, उसके थ्रू स्क्रैप आउट करते हैं। दिस प्रोसीजर में बी परफॉर्म फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस जैसे कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर हो रही है, और फॉर द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस अगर एबॉर्शन है। Endometrial ablation. This technique is uses heat to destroy the endometrium. It may be performed using the high frequency microwaves or the laser. अब ये जो हीट है ये माइक्रोवेव के थ्रू भी हम कर सकते हैं या फिर लेजर के थ्रू, लेकिन दोनों टेक्निक्स में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, और फिर जो हीट सोर्स होता है लेजर जो माइक्रोवेव वो हम इंसर्ट करते हैं यूट्रस में थ्रू दी वेजाइना। हिस्ट्रोस्कोपी हमारे पास एन एंडोस्कोप इज पास्ड along the vagina and introduced into the uterus through the cervix. It is used as a diagnostic tool to inspect the inside of the uterus. Laparoscopy and endoscopy is introduced via a small abdominal incision into the pelvic cavity.
हिस्टीरो इन वजाइना में हम कर रहे थे एंडोस्कोप के पास, और लैप्रो में हम एब्डोमिनल कैविटी में करते हैं। एब्डोमिनल जो कैविटी है उसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं और इसी के थ्रू हम पेल्विक को भी कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट द लोअर एब्डोमिनल कैविटी फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर एग्जांपल फॉर असेसमेंट ऑफ एक्यूट और द क्रोनिक एब्डोमिनल पेन। लेप्रोटमी है, ये क्या है हमारे पास, एनी एब्डोमिनल इंसिजन थ्रू विच द एब्डोमेन इज इंस्पेक्टेड इज नोन एज लेप्रोटमी। फिजियोथेरेपी किया जाती है हमारे पास अंडर पेशेंट्स अंडर गोइंग द gynecological surgery. The amount of physiotherapy care required by these patients varies considerably depending on the individual condition of the patient and the nature of the surgery. किस पेशेंट को कितनी फिजियोथेरेपी की जरूरत है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और सर्जिकल प्रोसीजर पे। द फिजियोथेरेपी विल यूजुअली हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वुमेन अंडरगोइंग मेजर gynecological surgery and must therefore be familiar with both the procedure and the patient. Pre-op physiotherapy, to enable the physiotherapist to give the most effective care, at least one pre-op session should be arranged in a calm, unhurried environment. It will comprise of assessment, instructions, discussion, and possibly treatment. Assessment देख लेते हैं. The following checklist may be useful: pre-existing medical condition, respiratory problem, mobility problem, backache, circulatory problem, diabetes और constipation. इन सबको हमने देखना है कि इनमें से कोई मसला है तो नहीं पेशेंट को। स्मोकिंग अगर वो करता है तो कितनी सिगरेट्स वो पर डे करता है, और स्मोकर कफ तो नहीं है पेशेंट का। पर प्रपोज सर्जरी और इंडिकेशन हमने देखनी है, सर्जिकल ऑप्शन कौन सा, किस प्रोसीजर के थ्रू उसकी सर्जरी होनी है और उस प्रोसीजर के इंडिकेशंस क्या हैं। कॉन्टिनेंस स्टेटस को हमने देखना है, प्रीवियस सर्जरी फॉर द फिजियोथेरेपी फॉर कंडीशन, एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जैसे केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स हैं। Patient who are undergoing surgery for the stress incontinence or possibly prolapse may have been referred for the physiotherapy prior to being put on the waiting list or whilst awaiting the admission. अगर किसी को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मसला होता है तो लाजमी नहीं है कि हम उसको सर्जिकल ही ट्रीट करें, हो सकता है उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ठीक हो जाए। फिजियोथेरेपी में पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है वो पेशेंट को कराई जाती हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो हमारे पास इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन होती है वो ठीक हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, जनरल एनेस्थीसिया जब भी हम पेशेंट को देते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट को सर्जिकल पेन होगा उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा। द नंबर ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसिंग द respiratory complications following the major gynecological surgery is low. However, there are a number of factors that increase the risk of post-op respiratory complications. अब complications कौन-कौन से हो सकती है पेशेंट को? COPD हो सकता है, एस्थमा है, स्मोकिंग है, reduced mobility and prolonged anesthesia. अब a pre-operative advice session allows the physiotherapist to identify the patient and risk of respiratory complications as well as to teach the appropriate technique to optimize the respiratory function. तो हम क्या करें, सर्जरी से पहले पेशेंट को असेस करें, अगर तो उसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंडीशन है तो पहले हम उसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब क्या कौन सी टेक्निक्स हम पेशेंट से यूज़ करवा सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए? ACBTs है, एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक्स, विद द यूज़ ऑफ द स्निफ एट द एंड ऑफ द इंस्पायरेशन टू इंक्रीज लंग वॉल्यूम फॉर एट रिस्क पेशेंट। सेकंड जो चीज़ हम पेशेंट से कराते हैं वो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक है, जिसे हम हफिंग भी कहते हैं, एंड सपोर्टेड कफिंग इज एडवाइज्ड फॉर द यूज ओनली इफ रिटेन्ड सिक्रीशंस आर प्रेजेंट पोस्ट ऑपरेटिवली। कफिंग इज लाइकली टू कॉज लेस पेन इफ द पेशेंट सपोर्ट्स द पेरिनियम एंड एब्डोमेन। जब भी वो कफ करेगा तो सपोर्ट करेगा अपने एब्डोमेन और पेरिनियम को, जिसकी वजह से उसे कम पेन होगा डिपेंडिंग ऑन द सर्जिकल अप्रोच। सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, देयर इज अ पोस्ट ऑफ रिस्क ऑफ DVT एंड पॉसिबली पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दिस इज ड्यू टू इंट्रा ऑपरेटिव प्रेशर एंड ट्रॉमा टू द pelvic vasculature as well as enhancement of the normal clotting mechanism caused by the surgery and bleeding. Early embolization helps to reduce these risks, although full range of plantar and the dorsiflexion of the ankle will also increase venous return in the calves. Stiffness and the soreness of the legs and buttocks can be reduced by the active hip and knee flexion and extension and by weight transference and pressure relief. Women will usually be encouraged to sit in chair for a short while on the first post-op day and will start to mobilize more fully on the second. बेड मोबिलिटी है, फिर इसके बाद मूवमेंट इन द बेड पोस्ट ऑपरेटिवली इज इनकरेज्ड। टेक्निक शुड देयरफॉर बी टॉट प्री ऑपरेटिवली एंड पेशेंट गिवन टाइम टू प्रैक्टिस ऑन अ हॉस्पिटल बेड। ये बेड मोबिलिटी टेक्निक्स जो हैं पेशेंट को हम सर्जरी से पहले सिखाएंगे, एज वेल एज रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द स्टाफ। दिस हेल्प्स द पेशेंट टू बी इंडिपेंडेंट एंड इन कंट्रोल। वुमेन शुड बी शोन सपोर्टेड resting positions such as half lying with a pillow under the thighs and side lying with pillows between the knees and under the lower abdomen. They should also be taught how to move from lying to sitting and from sitting to lying through the side lying to minimize any increase in intra-abdominal pressure. When moving up the bed, women should be encouraged to bend their knees and use their thigh muscles by digging in the heels and straightening the legs. Pelvic floor muscle exercises हैं हमारे पास फिर. These exercises are important regardless of the surgical route used. For women undergoing vaginal hysterectomy or the repair, the pelvic floor muscle exercises are directly affected by the surgery and need to be strengthened to provide maximal functional support. The role of pelvic floor muscle is the treatment of stress incontinence is well documented.
It is well documented that hysterectomy may affect the bladder and bowel function. Therefore, pelvic floor muscle exercises are also recommended following the abdominal hysterectomy. A combination of fast disymphysic कहते हैं slow maximal and the submaximal tonic contraction should be encouraged. Abdominal muscle exercises हैं. Transversus abdominis contractions are believed to facilitate pelvic floor muscle activity and enhance core stability. These exercises, which can be difficult to teach, should be taught in position appropriate for the post-op period, जैसे कि crook lying and standing. Pelvic tilting taught in the crook lying works the oblique abdominal muscles, but may also help to reduce the wind pain. Gentle abdominal muscle exercises also help to facilitate trunk movement and early mobilization by reducing the fear of movement. Posture and back here, decreased mobility, poor positioning, and lack of lumbar support may cause the backache in the post-op period. As well as the above abdominal muscle exercises and early mobilizations, patients should be advised to adopt supported positions using appropriately placed pillows or the lumbar rolls. This may also help to reduce the neck pain and headaches. Post-operative physiotherapy. The main objective of post-operative physiotherapy is that patient return to their normal function or better in an optimal time scale and without complications. Early treatment. The immediate objective are to achieve good respiratory and vascular functions and early mobilizations. For most patients who have received a thorough pre-op preparation, these issues will not be problem and no intervention will be required for the first day or two following surgery. Further progression, pelvic floor muscle exercises should be encouraged as soon as possible after surgery. Pain will cause muscle inhibition and so encouragement to take adequate analgesia along with a delay in commencing exercises is important if pain is a problem. Many physiotherapists believe that pelvic floor muscle exercises should be delayed if a catheter is present in the urethra, although there is no evidence to prove any harmful effects. The pelvic floor muscle exercises may be started if a suprapubic catheter is in place, although the abdominal discomfort around the catheter during contraction of the transversus abdominis may again cause a delay in starting these exercises. A combination of fast, slow, maximal, and the submaximal exercises are appropriate with varying emphasis depending on the type of and rationale for the surgery. If surgery has been performed for prolapse, submaximal contractions held for the several seconds increase may help to If the surgery has been performed for the prolapse, submaximal contractions held for the several seconds may help to increase resting tone of the pelvic floor muscles and increase postural support. Transversus abdominis, pelvic tilting, and knee rolling exercises in crook lying will help to reduce backache, stiffness, and wind pain. They may be commenced as soon as pain allows, usually within the first few days. Care, however, must be taken when recommending any progression of the abdominal muscle exercises, as any increase in intra-abdominal pressure could put a strain on the healing tissues. The most important reason for performing the abdominal muscle exercise is to improve the support provided by these muscles. Posture and back care. There is a tendency to adapt protective flexed posture following surgery. Abnormal postures require correction. This patient must be made aware of the problem and be encouraged to sit, stand, and walk tall using the transversus abdominis. The pelvic floor muscles and the lumbar support were appropriate. It is important that the woman understand how to take care of her back, and this must be discussed prior to discharge. Mobilizations. Early mobilizations help to prevent respiratory and the vascular complications as well as reducing the backache. Women will often be sitting out of the bed for a short while the day following surgery and will start to mobilize the following day. Initially, this will be short walks, probably as far as the toilet or the bathroom. Mobilization is not solely the responsibility of the physiotherapist, but referral by other members of the team is appropriate if difficulties occur with individual patient. A gradual increase in mobilization is essential prior to discharge. Stairs are not usually a problem for the woman after the gynecological surgery. However, if there is concern about the woman's ability to climb stairs at home following discharge, or if indicated for other reasons, then the physiotherapist can assess and advise the patient. Rest. This is as important as mobilization. Too much activity will cause tiredness, which can delay recovery. Sleep and relaxation can be difficult to achieve on a busy ward, but adopting comfortable resting position and discussing anxieties will help. थैंक यू. बहुत आसान सा टॉपिक था, जनरल सी चीज़ें थी. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.